sir on the stage, the President ICA. He will be presiding over the valedictory session. The President of BCA is already here with us. I would now like to invite the members of the Presidents of the founding associations. For the APCMA, I'd like to request Mr. Fani Raghavalu. Fani sir, let's have you on the stage. Mr. S.K. Anwaruddin is already up here on the stage. Mr. Rohit Zantier from Goa Cashew Manufacturing Association. I'd like to invite Rohit sir on the stage, please. Shri Naresh Patel, Gujarat Cashew Processors Association से है. मैं निमंत्रित करूंगी नरेश भाई को कि वो मंच पर अपना स्थान लें. D. Gopinath Kamath ji is the Karnataka Cashew Manufacturers Association President. I request him to please join us on the stage. Shri Suresh Bolekar is the President of Maharashtra Cashew Manufacturers Association. सुरेश जी से मेरा निवेदन है मंच पर आएं, अपना स्थान ग्रहण करें. श्री प्रभाकर पात्री, ऑल इंडिया कैशू प्रोसेसर्स एसोसिएशन, निवेदन है मंच पर आ जाइए. श्री जी सतीश नायर, साउथ इंडिया कैशू मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन. श्री एन मलार वासगम, तमिलनाडु कैशू प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन. Requesting your presence on the stage, sir. I would also like to invite a very special invitation on the stage being extended to the ICA Cashew Convention 2024, Chairman of the Events Committee, Shri Tukaram Prabhu. Please join us on the stage. Shri Naresh Patel, उर्विल जी प्लीज आप आ जाइए गुजरात के बिहाफ पे. तो चलिए, सारे हमारे जो फाउंडिंग एसोसिएशंस थी उन्होंने मंच पर अपना स्थान ले लिया. I leave this session in the hands of Mr. Rahul Kamath. Everyone be with us. These are the concluding remarks. Let's make this session a grand success. Thank you so much. It's been a long 3 days and we are coming to a conclusion. अभी जो आज आइका है वो 9 एसोसिएशन का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है. And I request all the associations to take 3 to 5 minutes to talk about something about their association and something about what they think ICA should do going forward. So this is what we are going to do in next 30 minutes. So we will start off with Bolekar ji, please. Thank you, ICA, President Kamath sir, and all the members, which is my friend. मैं हिंदी में बोलना चाहता हूँ. महाराष्ट्र कैशू एसोसिएशन 1990 में स्थापन हुआ है और आज उनके पास करीबन 400 कैशू इंडस्ट्रीज मेंबर है. 1,60,000 मैट्रिक टन हम प्रोसेस कर रहे हैं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमको बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं. जो कि मैं प्रेसिडेंट बनने के बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जितना भी हेल्प मांगा उतना मिला है. हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट से SGST वापस ले रहे हैं और अभी CGST भी वापस मिलने का चांस है इस महीने में. तो और 2022 में सर्वकष विकास धोरण काजू के लिए गवर्नमेंट में 1325 करोड़ का एक बजट में सैंक्शन हुआ है. उसमें वेंगुर्ला में काजू बोर्ड स्थापन हुआ है. 2,56 करोड़ उसमें सैंक्शन किया है काजू बोर्ड के लिए. काजू बोर्ड में प्लांटेशन बनाने का है, इंडस्ट्री को सपोर्ट देने का है और जो भी फार्मर्स प्लांटेशन करना चाहिए उसको हेल्प मिलने का है और फार्मर्स को जो लेस रेट मिलना है उसमें थोड़ा इंक्रीजिंग करके गवर्नमेंट से मिलना है. ऐसा आज हमारा एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था तब 72 मेंबर्स थे. अभी 357 मेंबर्स हमारे पास है और उतना ही मेंबर बाहर जो अननोन है वो उतना ही करीबन 1.5 लाख मैट्रिक टन प्रोसेस कर रहे हैं. आइका से मेरा विनंती है कि सभी स्टेट प्लांटेशन के बारे में सोचे. खाली गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा,
हमको ही फार्मर्स को हेल्प करके वो प्लांटेशन करना है। इसलिए सभी स्टेट ने, सभी इंडिया ने और आइका से ऑल इंडिया कैशू एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट देने के लिए, प्लांटेशन के लिए सपोर्ट करना है। दूसरी बात यह है कि काजू में जितना भी इंग्रेडिएंट्स है वो इंग्रेडिएंट्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के बारे साइड से डेवलप किया और हर बच्चे के टिफिन में 15 ग्राम काजू गवर्नमेंट से मिल गया। तो काजू सेल के लिए कुछ अलग सा सोचने की जरूरत नहीं, ऐसा मुझे 2 सुझाव देने का जरूरत मांगती हूँ और मैं रुकता हूँ। Thank you, Rahul ji. I am Rohit Zante, President of Goa Cashew Manufacturers Association. Well, Goa is one of the smallest states in the country, and being one of the oldest association, I think the industry in Goa is there for last more than 100 years. We are also very low in terms of membership. One of the main reasons is Goa is surrounded by 2 states where the association, Cashew Association is very dynamic. We are surrounded by Maharashtra in the north and Karnataka in the south. Now, as Bolekar ji had mentioned, Maharashtra government has done so much for cashew industry that Goa being one of the highest in terms of cost of processing, there has been a flight of industries from Goa to Maharashtra. And what we battle in our association is to keep the existing strength what we have. As when I joined the business, the number of factories in Goa, there was 45, we are down to 16. So some of the initiatives taken by our association is providing labor incentive scheme, which will compete with what Maharashtra is giving, so that there is some kind of benefit for cashew processing in the state. Also, Goa Association along with the government has recently got GI for Goa cashews, which will go in long way in protecting the brand of Goa cashews, and hopefully we can do justice to what the brand is developed into. Another thing is last 2 years, along with the Department of Forest, Goa, we have been promoting cashew through Cashew Festival, where we concluded the 2nd festival this year in the month of May, which is promoted as a tourism activity as well as promoting cashew nut and liquor from cashew. What is our expectation from ICA is, one thing is to get the figures of cashew processing, the crop aligned with what the government is saying. I think there is a huge disconnect, like Goa government, Goa Agriculture Department is talking about 24,000 tons. But when we ask the traders or people involved in the industry, I think the Goa crop is not more than 12,000 tons. Also, when there was a presentation on stage a couple of days back, the number of units is not updated. It's still showing 45 in Goa where it is 16. I think we should reset and accept where we are right now and then talk about growing from there. Unless we do that, I think we will be in a bubble and then there will be no correlation with what the reality is. Second thing, we have to increase the local crop. At Goa Manufacturers Association, we are going to work with the department. There is an agriculture college. We want to create model farms, multiple model farms every district, where we want to show to the farmers that cashew farming can be a financially viable option for farmers. And I think this model has to be replicated. Again, one of the problems has been there are no accredited nurseries in Goa. There is ICR which develops high graft varieties, but if you try to buy that, that is not available in the market. So there are things regarding crop, and also through consumption, I think we have to promote cashew as a snacking option. Cashew is being sold as a commodity, mostly through Kaju Katli and for gifting, but we want to push it as a snack as a healthy snack options during the day. Thank you. नमस्कार, गोपीनाथ कामत, सितारा कैशूज, कर्नाटका कैशू मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मैंगलोर। हमारा एसोसिएशन 1955 में, अगले साल 70 साल का बर्थडे हम मना रहे हैं।
एक्चुअली हमारा एसोसिएशन पे इनोवेशन क्या है कैशू इंडस्ट्री में, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एसोसिएशन ने वो किया है। आज भी हमारा एसोसिएशन हमारा कैशू इंडस्ट्री क्या क्या मांग है, ये सभी सरकार का सामने रखने का बहुत प्रयास हमारा एसोसिएशन कर रहा है। ऐसा ही कैशू ग्रोइंग, इसमें भी हमारा एसोसिएशन ने बहुत काम किया है। बहुत सैपलिंग एवरी ईयर हम ग्रोवर्स को बांट रहे हैं। आइका इस साल इधर ये हो गया। हम ये 10 साल पहला हुआ तो हमको हमारा इंडस्ट्री आज अभी अंडे वाले ने बोला है हम क्या कर, कौन सा तरीका से जाने का था। अभी हम इधर साथ मिल गए, सभी साथ मिल के ए आइका का साथ हमारा क्या क्या मांग है ये सरकार का सामने रख के इंडस्ट्री एज वेल एज कैशू कल्टीवेशन भी बढ़ने का प्रयास हम साथ में करें। इतना बोल के मेरा 2 शब्द इधर से। I am Malar Vasagam, President of Tamil Nadu Cashew Processors and Exporters Association. We are one of the oldest association in cashew industry, one of the leading exporters of the cashew kernels from India, our region, and we have more than 100 small and medium units and more than 500 cottage industries and processing capacity of more than 2 lakh metric tons in Panruti and Kanyakumari district. And the formation of ICA, All India Cashew Association, for the more than 2 years, we are talking about it, and it is in a good shape now. And with the able guidance of these our office bearers, we have to do cashew export promotion with the able guidance of APEDA. We have to increase the cashew kernel export to 5 years back what we have, that should be reached there. And with all states association forming, we have to increase the cashew consumption. But one thing we have to mind in, we are more dependent on imported raw cashew nuts. More than 60% we are depending on imported cashew nuts. And this year we have seen what happened during April and May because of the dependence of imported raw cashew nuts. So we have to ICA has to take up the initiative to increase the raw cashew nut production. By 2030, we should be self-reliant and we should not depend on imported cashew nuts. As we all know, Africa, the processing is going up and they are competing with our market like Vietnam. So we have to increase the local production of raw cashew nuts, and ICA has to take up the initiative with all state governments and the central government to do it. Because all governments are supportive of that. Because in Tamil Nadu, we have a issue for more than 40 years, this Agricultural Produce Marketing Committee Chase Act, which was a hammer for export of cashew kernels. And this year, the Tamil Nadu government has abolished that for import of raw cashew nuts, and as well as the export of cashew kernels, the APMC 1% chase is exempted. So we are thankful to the Tamil Nadu government for this initiative. So like this, all state associations do their part, and ICA on their part, we can reach our premier position like 5 years back. And the main, one more agenda is we have to increase the raw cashew nut production locally. We should not depend on others. Thank you for the opportunity, one and all. Thank you.
I'm Satish Nair. I'm the president of the South India Cashew Manufacturers Association. We are based in Kerala, and we are probably the oldest. We were formed in 1940. I don't know if anyone is earlier than that. So we are probably the oldest because Kerala was a hub of cashew exports for quite some time. And our name is very apt because we are South India Cashew Manufacturers Association. And most of our members, in fact, do not have running operations in Kerala. It's either Andhra Pradesh or in Tamil Nadu. So I think we are together with the Tamil thing and the Andhra with Mr. Fani there. Just a few points that I wanted to mention. So a body was definitely required after I think, the way that CPC faded in the background. We needed a body to represent the interests of the cashew industry. And I'm very happy that we have this body right now. I think it was 2 years ago that he called me Rahul called me and said that they want to create a body and requested us to be members. We all had a meeting and did together and decided, yes, definitely we want to be there. And I thought this was going to form much earlier, but finally it did. Very happy it did. And I think in the forum also, we are probably one of the few who have the fourth generation wanting to come into the cashew industry, as Pratyush is the fourth generation. And so we are very happy that we are still continuing the tradition of being in the business. I think the major points that we have to tackle right now has already been, I'm just being a little bit repetitive. One is plantations. Unless we grow our plantations and unless we secure our supply chain, it's going to be very difficult for us. So that's something that I think ICA as a body with APEDA, probably with Ms. Femina, how to go about it. We have to try and make it as considerate as possible because the land, I understand, is there. So how to make it possible, we really have to think very seriously because this is going to be a big problem. The supply chain is going to be a big problem. And again, APEDA, we are very happy that APEDA is so supportive. They have already announced some schemes for us. And we have to support the health benefits of cashews. I was talking to APEDA, the gentleman, he said, send us whatever you can. We're going to try and do it. So we can make a health claim in any cashew packet saying that it is good for health. Just like almonds. If you sell almonds in the USA, you can make a health claim that it's good for your heart. Again, we have exports, of course. We do exports, it's coming down. But as somebody was saying here, we are 1.4 billion people in India. So everybody, you look at almonds, I think India is like the biggest market. Pistachio is the biggest market. Cashew is the biggest market. So definitely, we have to consider India. And the biggest problem that we have, we cannot export. We don't have enough raw seed. That's the biggest problem. If you address that, I think we can definitely go into exports. And again, the input duties into South Korea and China, if you can tackle that along with APEDA, it's high. I think, there may be many here who oppose me. People used to say, Modi hai, to mumkin hai. I say, Aika hai, to mumkin hai. Thank you. पहले आइका का प्रेसिडेंट राहुल जी, सेक्रेटरी रामकृष्ण जी, उर्मिल जी, फनी जी, ऑल मेंबर को पहले बंगाल एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद देता हूं। नमस्कार जनाब। और मंच में स्टेट वाइज प्रेसिडेंट ऑल मेंबर को मेरा तरफ से धन्यवाद, नमस्कार। और सभी लोग जो बैठे हैं सब स्टेट से आए हुए हैं, सभी को मेरा प्रणाम और नमस्कार करता हूं। मैं बंगाल का जो एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं, उधर 1500 से लेकर 2000 फैक्ट्री यूनिट है। मेरा ख्याल से 800 to 1000 मेट्रिक टन डेली प्रोडक्शन। क्वालिटी के बारे में यदि अगर बोले, बहुत इंप्रूव हुआ है। बुरा मत मानिएगा। हम लोग जानते थे मैंगलोर नंबर 1 क्वालिटी करते हैं, बंगाल भी कोई कम नहीं है, मैंगलोर का जैसा क्वालिटी बनाता है। और उधर का क्वालिटी का ट्रेड ड्रम अलग है। जैसा आप लोग 320, 240, 260 मार्का देके आप लोग छोड़ते हैं, हम लोग इधर से 80% फैक्ट्री वाला अमेरिकन डबल स्प्लिट जेज, उसके बाद 20% फैक्ट्री 320, 240, 260, 180 एटसेट्रा सब बनाते हैं।
तो जो अमेरिकन जो मार्का देता है ना, हम लोग का काउंट रहता है 360, पूरा ऑल ओवर इंडिया में सेल होता है। और जो भी इशू होता है बंगाल में, सबको मालूम है, हमारा मुख्यमंत्री सभी का दीदी है, हम लोग का दीदी है, आप लोग का भी दीदी है। पूरा बंगाल में पूरा फैक्ट्री को कोई भी इशू होता है साथ देती है, कोई भी इशू आता है। और पूरा हमारा जितना यूनिट है, कोई गवर्नमेंट का इशू, टैक्स इशू, ऐसा सामने एक मार्केटिंग का 1% लगा दिया गवर्नमेंट। मतलब 1% मीन्स आप इंपोर्ट माल हम लोग खरीदते हैं, एक गाड़ी में 40,000 रुपया टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। मैं ऐसा खड़ा हो गया सामने, मैं बोला नहीं देगा मैं। सिचुएशन ऐसा है काजू का, अगर एक गाड़ी में 40,000 टैक्स जाएगा, 100 मेट्रिक टन में बहुत सारे पैसे निकल जाएगा। हम लोग रोड पे खड़ा हुआ और गवर्नमेंट पीछे हट गया, मैं अभी 1% हटा दिया। और कोई भी इशू उधर आता है, लेबर कमीशन, कुछ भी इशू आता है, हम लोग फैक्ट्री का सामने खड़ा होता है, सभी लोग मिलके, हम लोग हर टाइम फैक्ट्री वाला का साथ देता हूं, इसलिए हम लोग फुल यूनिटी करके रखा है। और बंगाल में एक डिस्ट्रिक्ट ईस्ट मिदनापुर, जहां हम लोग बिलोंग करते हैं, वही डिस्ट्रिक्ट ईस्ट मिदनापुर में 1500 फैक्ट्री है और सराउंडिंग 40 किलोमीटर के अंदर आप इधर से निकलेंगे 5 मिनट बाद उधर एक फैक्ट्री देखा मिलेगा। क्योंकि अलग स्टेट में हम मालूम है, जो इधर से एक फैक्ट्री विजिट किया तो करीबन 20, 30, 40 किलोमीटर उधर एक फैक्ट्री मिलेगा। सराउंडिंग 40 किलोमीटर के अंदर ये पूरा 1500 फैक्ट्री आपको मिल जाएगा। और पूरा फैक्ट्री वाला हम लोग एक साथ मिलके जो भी डिसीजन करते हैं, हम लोग 28 जुलाई से लेकर 28 अगस्त तक हम लोग अभी स्ट्राइक करके रखा है। फैक्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ है क्योंकि मार्केट जो क्रैश हुआ है, इसके वजह से फुल फैक्ट्री अभी स्टॉप करके रखा है। हम चाहते हैं राहुल जी को ऐसा पोजीशन आएगा तो काजू का हर स्टेट एक ही टाइम में ऑल ओवर इंडिया में सब प्रोसेसिंग यूनिट बंद करना चाहिए, अगर ज्यादा क्रैश होना चाहिए तो। मेरा एक ओपिनियन है। तो मार्केट थोड़ा क्या आएगा, थोड़ा ऊपर आना मांगता है। तो जो प्रोग्राम आप लोग आईके ने किया है, पहले बार इतना बढ़िया सक्सेस किया हुए, मैं फिर दोबारा दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल जी को। फिर नेक्स्ट ईयर और भी बड़ा होना चाहिए, और भी बड़ा पार्टिसिपेट होना चाहिए। हम लोग सभी लोग फिर आएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। जय जगन्नाथ। I welcome you to all on behalf of all Odisha Kaju Processor Association. Dear President राहुल जी, तुकाराम जी, और हमारा जो स्टेज ऊपर है, हमारा प्रेसिडेंट ऑफ ऑल स्टेट्स और फ्रेंड्स, आई वांट टू रेज सम पॉइंट्स ऑन आवर काजू इंडस्ट्री। My first point is, the All India Cashew Association is not just a name, it is a powerhouse, a vital pillar in the cashew industry that stretches across different states in India. The importance of ICA's work cannot be overstated. As we gather here, it is crucial to reflect on what we have, what we need to do, and why we must act. We have a vast and robust cashew industry
with plantations spread across many states. Our factories with high processing capacities are distributed throughout the country. However, a critical issue we face is the lack of raw cashew nuts within our own states. This deficiency forces us to rely on other states and more significantly on imports from African countries. This dependency is not sustainable. As cashew industry in Africa grow rapidly, the availability of RCN for India will diminish, leading to severe shortage for our factories. This scenario threatens our ability to meet domestic demand. Case in point is the RCN export ban in Republic of Benin from 1st April 2024. What should we do in the face of these impending challenges? The time to act now. We must focus on expanding cashew plantations across India. It is our duty to engage with both state and central government to advocate for extensive plantation programs. Let us consider an important comparison. The state of Karnataka, with a land area of approximately 2 lakh square kilometers, produces about 1 lakh metric tons of cashew annually. In contrast, Ivory Coast, an African country with a comparable land area of 3 lakh square kilometers, produces between 8 lakh to 9 lakh metric ton of cashew each year. Despite the similar land area, Ivory cashew production is nearly 8 to 9 times higher than that of Karnataka. The comparison clearly illustrates the untapped potential for cashew cultivation within our country. If we can optimize our land use and invest in extensive plantation program, we have the potential not only to meet our domestic demand, but to exceed it, to significantly to achieve this. I propose that we consider converting underutilized land, such as certain jungle areas, into productive cashew plantations. Furthermore, this initiative could be a mean to uplift marginalized. Initiative could be a means to uplift marginalized communities. We could engage the SC/ST communities as caregivers of these plantations, providing them with employment opportunities and integrating them into the growth of this vital industry. ICA should spearhead this initiative starting as soon as possible to ensure the sustainability and future growth of the Indian cashew industry by working together with the government bodies and liberalize our vast land. Another significant issue plaguing our industry is the financial crisis we face throughout the year. Banks are increasingly reluctant to provide key cash credit facilities, leaving us financial constrained, especially during the critical harvesting season when we need to purchase raw cashew nuts. This financial strain severely hampers our ability to operate efficiently and capitalize on the market opportunity available during the peak season. ICA must take the lead and addressing this issue by engaging and discussions with the
central government to find a viable solution, we need a policy framework that recognizes the unquestioned financial needs of our industry and ensure that entrepreneurs have sufficient access to credit. We must push for a more supportive financial environment that allows us to focus on growth and innovation rather than being bogged down by financial constraints. There are growing concerns about some importers and machine suppliers who are alleged harassing our entrepreneurs. This is an issue that ICA must take very seriously to protect the integrity and well-being of our industry. To address this, I propose that ICA take the appropriate steps. If any state association formally files a complaint against a machine supplier or importer, ICA should promptly blacklist the company across India and try to give justice to the entrepreneurs, taking legal steps necessary. By doing so, we can safeguard our industry members and maintain the credibility, trustworthiness of the cashew sector. Currently, the price of raw cashew nuts and kernels are exceptionally high, causing both buyers and consumers to hesitate in purchasing at the current rates. This situation is creating a challenging market environment where demand being stifled due to unpurchasability of these essential products. Adding to this burden is the government imposed 2.5% import duty and 5% GST on these products, which collectively amount to around rupees 50 per kilogram. Meanwhile, our entrepreneurs are barely making rupees 20 per kilogram, leading to a situation where profitability is severely compromised. To address this issue, ICA must take a strong stance and advocate for the removal of the import duty on ASEAN. By doing so, we can help balance the market, reduce prices, and make these products more accessible to consumers. This step is essential not only for the survival of our entrepreneurs, but also for ensuring that cashews remain an affordable option for the average consumers. I urge to ICA committee to take a bold step and propose the creation a national cashew policy at the government level. Such a policy would be instrumental in addressing the myriad challenges we face, from financial constraints to raw material shortage, and would play a critical role in securing long-term benefits for our industry and the country as a whole. A national cashew policy would provide a comprehensive framework to support every aspect of our industry, from cultivation and processing to marketing and export. It would ensure that we have the necessary infrastructure, financial support, regulatory environment to thrive in a competitive global market. By advocating for this policy, ICA would not only be championing the interest of our industry, but also contributing to the broader economic development of India. The cashew industry is a significant source of employment and revenue, and a well-created national policy could unlock its full potential, driving growth and prosperity for all stakeholders. Let us work together to push for the creation of this policy, ensuring that the future of the Indian cashew industry is secure, sustainable, and prosperous. Finally, let us take about our consumers. The majority of them belong to the middle class
with monthly earning ranging from 50,000 to 60,000 or below in recent times. Essential food items like rice, potatoes, onion, edible oils, and spices have seen their prices double compared to the previous year. This surge in prices has significantly impacted household budgets, leaving little rooms for discretionary purchases like cashews. As a result, many of our consumers are being pushed out of the market. This is a concerning trend as it directly affects our sales and the overall health of the industry. Already 5 months have passed in our current season, and it is crucial that we take stock of the situation. I urge all of you to review our cashew sales scenario and compare them with previous years. It is evident that sales are down due to the high price, and if this continues unchecked, we risk further alienating our core consumer base. To address this, we must consider this challenge seriously and take decisive action. This could include revising our pricing strategies, advocating for policy changes that can help reduce cost, and ensuring that our products remain accessible to the very consumers who have supported our industry over the year. We need to adopt the changing economic health and take strong decisions to safeguard the future of our industry by being proactive and responsive to the needs of our consumers. We can work together to stabilize the market and ensure that cashews remains a valued and affordable parts of their lives. ICA has a crucial role to play, a liaison between the government of India and the state association. Our industry faces a range of challenges that require coordinated efforts, and both the state and central levels. ICA should actively engage with the central government to address and normalize this issue, ensuring that policy and regulation and streamlined effectively implemented across all states. Likely, state association will liaise with the state government and facilitate the problems of state issues and implement any change in the policy. Thank you all. Thank you so much. नमस्कार, मैं नरेश पटेल, प्रेसिडेंट गुजरात कैश्यू प्रोसेसर्स एसोसिएशन। वी आर वन ऑफ द यंगेस्ट एसोसिएशन। इधर सब कोई 40 साल है, कोई 25 साल है। हमको 2015 में फॉर्मेशन हुआ है और वी हैव एक्टिव 80 प्रोसेसर्स करंटली, और दूसरा भी इंडस्ट्री ग्रो हो रहा है गुजरात में। अच्छा इंडस्ट्री का ग्रोथ अच्छा है, लेकिन अगेन सबने बताया वैसे रो कैश्यू नट इज अ चैलेंज एंड प्रमोशन ऑफ कैश्यू। तो उसके लिए हम लोग जीसीपीए की तरफ से मैं राहुल जी को अश्योर करता हूँ वी आर ऑलवेज विथ यू। हम लोग आपके साथ ही रहेंगे, कोई भी हमारा हेल्प है। वी आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन आइका। बहुत अच्छा चीज है कि आइका हैज फाइनली फॉर्म्ड। हमारा जो इंडस्ट्री का एफएसएसआई है और जो सब्सिडी का जो कोई पूरा था नहीं, उसका भी अपीडा ने अनाउंस किया है, वो बहुत अच्छा चीज है। सो अगेन आई कॉन्ग्रेचुलेट राहुल जी एंड ऑल टीम फॉर फॉर्मिंग आइका। थैंक यू वेरी मच। सबको नमस्ते, मेरा नाम है एम कांता राव। हमने आंध्र प्रदेश स्टेट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सबसे पहले ये आइका तैयार करने के लिए इतना पूरा अपना काजू का फैमिली ऑल ओवर इंडिया में है, अलग अलग जगह में कमिटी मेंबर्स सब मिलके सबको इकट्ठा करके पूरा फैमिली को एक जगह में रख के एक बहुत अच्छा फेस्टिवल बन गया। अभी 3 दिन बहुत अच्छा लग रहा है और सबको मेरा तरफ से एपी स्टेट एसोसिएशन का तरफ से कंग्रेचुलेशंस है। दूसरा
स्टेट हमारा आंध्र प्रदेश स्टेट में टोटल 2 लाख हेक्टर्स लैंड में कल्टीवेशन है काजू का, वो उसमें 1 लाख टू 1.2 लाख फसल आ रही। अभी गवर्नमेंट हमारा गवर्नमेंट भी चेंज हुआ है और डायनेमिक सीएम सर आया है, उनको इंडस्ट्री बोले तो बहुत अच्छा इच्छा है। ऑलरेडी हम लोग जाके मिलके लैंड डेवलप करने के लिए बोला है। ऑलरेडी लैंड डेवलप करने के लिए 1 लाख हेक्टर्स खाली जगह पड़ा है। हिल होगा, खेती होगा, गवर्नमेंट का खेती होगा, जो भी होगा उसमें आगे डेवलप होगा। और पूरा आंध्रा में 750 प्लस यूनिट्स है, फैक्ट्रीज है। और आगे अभी हम लोग 3 इंडस्ट्रियल पार्क के लिए रिक्वेस्ट रखा है स्टेट गवर्नमेंट पर, वो भी आ गया तो और एक 300 to 400 यूनिट्स नया आने के लिए चांसेस है। दूसरा बात, अभी अपना समस्या बोले तो मार्केट कमेटी का एक समस्या है। एका ने टेक ओवर करके ऑल ओवर इंडिया में एक ही तरीका एएमसी मार्केट कमेटी का रखने के लिए ट्राई कीजिए, और सेम इस तरीका अगले साल भी सब लोग मिलूंगा, एक फेस्टिवल बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। इस पूरा एसोसिएशन में सबसे यंगेस्ट एसोसिएशन आइका है, अभी जस्ट शुरू हुआ है। एंड इतना बड़ा एक्सपेक्टेशन सेट किया। नायर साहब ने बोला आइका है तो मुमकिन है, डर लगता है जब ये सब सुनते हैं, क्योंकि जब अब वी आर जस्ट स्टार्टिंग टू वॉक एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग अस टू रन द मैराथन। अभी इसमें क्या हो रहा है, सबका साथ चाहिए। अभी दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, बिकॉज जो काम करना है, इसलिए मैं सब एसोसिएशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना एसोसिएशन से सबसे बेस्ट टैलेंट 3, 4, 5 पिक करके हमको दे कि आइका के लिए ये काम करेंगे, सो दैट बहुत कुछ आइटम्स शॉर्टलिस्ट किया है, रॉ कैशू नट प्रोडक्शन, न्यूट्रिशन वैल्यू, कर्नल मार्केटिंग। बहुत लोगों ने 2-3 बात नहीं बोला, वो क्या है कि इलीगल इंपोर्ट्स ऑफ कैशू कर्नल जो हमारे इंडस्ट्री को अफेक्ट कर रहा है। देयर आर मेनी सच थिंग्स। ये सब करने के लिए हमको मैन पावर चाहिए। तो मेरा सब एसोसिएशन के रिक्वेस्ट है कि आप अपना बेस्ट टैलेंट हमको दीजिए, so that we can work on this. With this, I thank you everybody. And before Tukaram ji gives Tukaram ji is the backbone behind this event. And please, everybody give him a big applause. Yeah, because Tukaram ji has really worked hard to get this event successful. And before he gives a formal vote of thanks, I just want to give mementos. बहुत सारी एसोसिएशंस हैं जिनसे मिलके आइका बना है। उन एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स यहाँ पर हैं। श्री एस.के. अनवरुद्दीन, बंगाल कैशू एसोसिएशन। सबने अपना अपना मत रखा है, अपनी अपनी भाषा, अपने अपने हिसाब से अपने विचार रखे हैं, बट आइका इज द ओनली प्लेटफॉर्म विच गेट्स एवरीवन टुगेदर। मिस्टर रोहित जानचे, गोवा कैशू मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। नरेश भाई पटेल, गुजरात कैशू प्रोसेसर्स एसोसिएशन। इन इस ट्रू गुजराती स्पिरिट बहुत छोटे में और बहुत काम की बात कहकर बात खत्म कर दी नरेश भाई ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोपीनाथ कामत जी, कर्नाटक कैशू मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। ऑलवेज अ डिलाइट टू हियर। श्री सुरेश बोर्लेकर, प्रेसिडेंट महाराष्ट्र कैशू मैन्युफैक्चरर्स। प्रभाकर पात्री जी, ऑल ओडिशा कैशू प्रोसेसर्स एसोसिएशन। मिस्टर जी सतीश नायर, साउथ इंडिया कैशू मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। श्री मलार वासगम, तमिलनाडु कैशू प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन। And we have a very special memento for Mr. Tukaram Prabhu. Going with the amount of effort that he has put into the convention, I think that the motive of the memento just suits the gigantic size of his efforts.